In this video, which is so nice. Also on your left hand we have a Joby stage, a lot of हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आ गया हूँ वापस से मैं एक्सपो की सीरीज़ लेके। और आज है 29 जनवरी 2022 और अभी मैंने कुछ खाना लेकर आया था, बिरयानी, तो वो मैंने यहाँ पे खा लिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे कुछ पवेलियंस में जो मेरे रिमेनिंग थे। प्रीवियसली मैंने स्टैम्प नहीं लिया था और विज़िट नहीं किया था, कुछ बंद थे, तो इसके लिए आज मैं आया हूँ इधर। तो चलो आज के नज़ारे आपको बताता हूँ कि कैसा लगता है आज का दिन। यार ये वाला जो पवेलियन है ना, टुवालू, इसको कितना टाइम लगा रहा है ढूंढने के लिए। मतलब सबसे बड़ा मुश्किल जो पवेलियन था ना, वो ये वाला था ढूंढने के लिए, और आखिर में मिला और हो गया अपना स्टैम्प। वैसे छोटा सा था, कुछ ऐसा दिखाने लायक नहीं था, बट हो गया फाइनली। अभी मैं हूँ नेपाल के पवेलियन में, तो आप देख सकते हो ये है अवेकन बुद्धा। और यहाँ पे लोग ना इसको चेहरे पे ना पैसे दिखा के यहाँ पे डाल रहे हैं इस बॉक्स में। पतीले का क्या है, पीतल का। और ये कुछ उधर का ट्रेडिशनल मंदिर है, उनका गॉड है ये। और ये तो अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ से बना है, एकदम कॉटन जैसा लग रहा है, एकदम नरम। मस्त क्यूट है ना, अच्छा है। देखो ये पोलैंड के पवेलियन के पास ना एक कॉफ़ी शॉप है, आइसक्रीम का कोन देखो कितना बड़ा है यार। ये कुछ बच्चे लोगों के लिए है यहाँ पर। मज़ेदार है यार। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये एक्सपो एक्सप्लोरर ट्रेन का जो यहाँ पे क्यू है, तो इसके अंदर जाके थोड़ा मज़ा लेते हैं। ये थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये अभी क्यू में खड़े, यहाँ से जब ट्रेन आएगी उसके बाद में सब बैठ के उसमें जाने वाले, और यहाँ से जैसे राउंड मारने वाला, तो थोड़ा उसमें फन होने वाला है। तो देखते कैसा एक्सपीरियंस होता है। ये आ गई है ट्रेन, देख सकते। अभी हम लोग ट्रेन के अंदर चढ़े एक्सपो एक्सप्लोरर में, तो पब्लिक ऐसे धक्के वक्के मार के चढ़े जैसे इसके बाद में कुछ बैठने मिलने वाला नहीं है और सब बंद हो जाने वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा रश है, ये पूरा इनकी बोगी है, वहाँ से सीधा स्ट्रेट जाने वाली है ट्रेन। ये क्यू है जहाँ पे हम पहले खड़े थे, और ये लास्ट बोगी में हम, मतलब वो बॉक्स के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो यार कैसे लोग यार धक्का वक्का मार के कैसे चढ़ जाते हैं यार। mobility district for 20 minutes. I'll be showing cases each pavilion and provide you with the information on each pavilion. So I hope you will enjoy your journey. तब ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ये ट्रेन में से जहाँ जहाँ जाने वाली है। You can see the long queues there. On your left side you can see the Belgian pavilion, which is right here. They have the best waffles, if you like waffles, and even fries. And they also have the chocolate, which you can try them for free. They are showing the culture they have, and also the mission to reach to Mars. ये क्या मजेदार लग रहा है, देखो इसको।
Aleph Pavilion, which is the main theme of Mobility District. It showcases the mobility, how it was and how it's now, and how it will be in the future. Also, Aleph is one of the biggest pavilions here in the Mobility District. Here in the world, which contains 200 capacity each trip. Also in Aleph they have 3 sessions starting from the mobility and from the 3 giants. Then it showcased the technology, and in the end they showcased the mission to reach to the Mars in the past 2 years. On your left hand, which is right here, we have the entry portals. The world's largest common lava structure in the world. They are 23 meters high and they are made by Asafan, which is a Pakistani artist. Now on your left hand you can see the sport hub, which is free, actions and combat fight as well, and all of them are for free to adults and children. This is why it's crowded and they have a lot of performances. In general, they showcase the culture they have and the environment there, and how are they trying to be sustainable. الخشب ده اللي انا اقصد عليه، كنت عايز اوريهولك بس مش فاكر كان بتاع ايه. After Australia, we have the Denmark Pavilion, which is the oldest flag in the earth. They showcase the culture they have. After Denmark, we have Oman, which they have the mother, a tree, they call it the mother tree, which is 7,000 years old. They used to use it on trading, medicine, and perfumes. Finland showcase the culture, the sustainable ways they have to improve the country, and also they have coffee in the end. After that we have Algeria, also on your left hand. Algeria showcase the culture they have, and also talks about the 1.2 desert, the 1.2 million desert that they have. On your right hand we have Syria Pavilion, which showcase the horticulture and arts from Syria, and also the Arabic words that they use in Syria. Any information about Expo, you can just ask any information center. They have prayer rooms, and also some of them include Zoom if you want to buy a snack or something. حلوة قوي تركمانستان دي، حلوة قوي. After the visitor center we have Turkmenistan, which talks about the culture they have, and also the 5 horses in the entrance to show the importance of horses in their culture right there in Turkmenistan. This is Russian Pavilion on your left hand, which showcases how the brain works, and also they have an AI system which can identify you, like how old are you, where are you from, and your age. It's the second largest pavilion here in Mobility District after Aleph. On your right hand, right here, we have the food court, which contains 7 different food trucks, which you can try one of them, or maybe try them all. Why not? Peru showcase the culture they have, the clothes they wear, and it's all made by the hand. And on your right side we have Mongolia and Expo World
EXPO Museum, which showcased 171 years ago 34 cities hosted the Expo, including New York, Seattle, London, and many different cities. Or connecting. It has a 360 projector that showcases the performance of any game that they need to use. And yesterday, Cristiano Ronaldo was here. On your right hand, you can see Costa Coffee if you want to grab a coffee or something. And on your left hand, you have the partners. Shoes and get inside it and walk in the water, which is so fun for adults and children as well. It contains 4 different restaurants, but most of them are African restaurants. So if you want to try the African food, this is the best place to do that. Each queue presents an idea they have in the country, and also they have the rooftop view. If you want to see the expo from up view, you can just visit the Korean view. They showcase the art culture and the culture as well they have there. And also they have a K-pop performance starting from 1 p.m. It's so crowded because of the performance they are having. Also on your left hand we have a Rush playground if you want the children to play, and if you want to sit for a bit, that's the best place to do that. On your right hand right here we have Hungary, which showcases the culture there, and also it showcases the different kind of water they have back there. And the best part there is the pool balls. It's a pool full of balls that you can swim in or play in, which is so nice. Also on your left hand we have a Joby stage. A lot of performances happened there and it was so crowded. Yesterday a famous Arab artist called Balbis was having a performance here. And now for our last pavilion, which is Irish, which is on your left hand. It showcases the culture, the music, and also the sustainable ways they choose to, they prefer to use to make the country more sustainable. तो हो गई ये ट्रेन की जर्नी, अच्छी थी और पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी मिला जो भी पवेलियंस का था। मज़ा आ गया यार, बैठे बैठे पूरा एक्सपो कवर कर लिया हमने और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई जो हमको पता नहीं थी। तो अच्छी थी ये ट्रेन जर्नी। आप भी आए और आप भी इसके अंदर जाके बैठ सकते हैं जो फ्री में है। अच्छा है ना, और क्या चाहिए, चलने से पैर दुखेगा उससे बेस्ट है थोड़ा इसमें बैठ के सारे शॉट में एक कवर कर सकते हो आप। तो ये है अंदर आयरलैंड का पवेलियन, मैंने स्टैम्प ले लिया है, ये वाला ग्रीन वाला आप देख सकते हो। और ये छोटा सा था, इतना कौन सा बड़ा नहीं था। और इसके पहले आप हंगरी देख चुके हो पिछले क्लिप में, तो ये आप देख लो बाहर ना कुछ तो भी शो चल रहा है इधर। थोड़ा आए हुए थे डोमिनिक रिपब्लिक का स्टैम्प लेने के लिए, ये रेड वाला। तो वापस से आप देख लो, ये एक उसके बाजू में ना एक कैफेटेरिया जो पिछले क्लिप में आपने देखा, तो इसका नाम देखो आप, फैट आंट क्या नाम है यार, इतना फ़नी नाम रखा हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वो कॉफ़ी पीने के लिए। तो वो ऑस्ट्रेलिया पवेलियन में कॉफ़ी अच्छी होती है और सस्ती है। तो मोनाको के पास है एक, लास्ट टाइम पिया था मैंने आपको बताया भी था क्लिप में, एक वीडियो में। और अभी उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में भी पिया है, वो भी 10 दिरहम की ही है
तो लास्ट टाइम आए थे हम लोग तो वो मशीन ख़राब थी उनकी, तो अब जाके देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पवेलियन में वो मशीन ख़राब है नहीं है या सच में मिलती है। तो उसकी कॉफ़ी पीते, थोड़ा कॉफ़ी की तलब लगी है, तो लेट्स गो। तो फाइनली हमने ले लिया है 2 लाटे और इनकी मशीन चल रही है ऑस्ट्रेलिया पवेलियन में। ये रेडी हो रहा है अपना कॉफ़ी लाटे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आ गई अपनी ये लैटे और अब जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं गरम गरम लैटे पीने के। आप भी आ जाए पीने के लिए। जगह तो फुल है, मिल नहीं रही है हमको, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सर्च कर रहे हैं। क्राउड है, आप देख सकते हो पीछे पूरा, यहाँ पे थोड़ा शोर है, तो थोड़ा जगह ढूंढते हैं और बैठ जाते हैं और लुत्फ उठाते हैं अपने कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी वगैरह हो गई हमारी और उसके बाद में अभी मैं इधर आया हूँ, ये इजिप्ट पवेलियन है, आप देख सकते हो कितनी रश है इधर। तो 1 घंटे का टाइमिंग है यहाँ पे, खड़े रहने का वेटिंग है। तो मैं सोचा कि यार वेट करके मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को खड़े नहीं रहने का, इतना टाइम वेस्ट होएगा बेकार में, मतलब कुछ और दूसरा कुछ फन एंटरटेनमेंट कर नहीं पाएंगे, वो मिस हो जाएगा। तो इसके लिए अभी देखता हूँ कुछ और आपको दिखाने के लिए। यार मैं अभी ना इधर ये क्वीनिया का पवेलियन में आया हूँ, तो बाहर ना ये ऐसी चेयर रखी हुई है और पता नहीं ये कुछ तो है इनका, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींच लिया है यहाँ पे बैठ के। बड़ा मज़ेदार है यार चेयर। मैच छोटा लग रहा था, ये चेयर बड़ी लग रही है। फनी है। तो अभी मैं आया हूँ सरीनेम, ये एक पवेलियन है, छोटा सा है, ये एंट्रेंस है उसका। चलो चल के देखते कैसा है ये। डेकोरेशन है इसका, अरे मस्त बना है। अरे आप देख सकते हो ये नाव वगैरह रखी है और ये आप एंट्रेंस देखो कितना ज़बरदस्त है यार ये एंट्रेंस। एकदम ऐसा लग रहा है कोई जंगल वगैरह में चल रहे हैं। सुपर है यार। टहनी वहनी लगी हुई है थोड़ी झाड़ की। अरे वाह। और जो थोड़ा ये जो म्यूज़िक वगैरह भी दे रहा है ना बैकग्राउंड में, वो भी थोड़ा जंगल में जो नाइट में कीड़े की आवाज़ आती है ना, वैसा लग रहा है। अच्छा बना है, अच्छा लगा ये वाला पवेलियन भी मुझे। तो ये फिनिश हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। अब स्टैम्प लेके निकलते आगे।